ago, the SpaceX founder and CEO went on the Late Show with Stephen Colbert and discussed a strategy for making the red planet more livable, detonating nuclear bombs over its poles. The explosions would vaporize a fair chunk of Mars ice caps, liberating enough water, vapor, and carbon dioxide, both potent greenhouse gases, to warm up the planet substantially. The idea goes. And if ए कृष्णा, कार्बन डाइऑक्साइड तो तूने बोला पहले से एटमॉस्फेयर में. yes, yeah, in the next slide, I am going to discuss that only. Okay, ठीक है. So I can sense this thought is a very crazy thought. I think it is crazy. Nukes. इलॉन मस्क के भाई कुछ तो होगा. But a very game-changing research was there. But ओके, नहीं उसके लिए नहीं हंसा मैं कृष्णा. ये भावेश ने लिखा कि न्यूक्लियर बम फोड़ने के बाद मार्शियन लोग कहीं से नीचे से आके लड़ाई झगड़ा न करना चालू कर दे. दैट इज इंटरेस्टिंग. ओके, कंटिन्यू कृष्णा. सर आपने भी क्या बोला? अरे वो चैट में देखना भावेश ने क्या लिखा है, और 12वीं का, कि जस्ट इमेजिन आफ्टर ब्लास्टिंग मार्शियंस कम आउट इन रेज एंड इंटरप्लैनेटरी वॉर टेक्स प्लेस. सर गजब है. यू नेवर नो. जमीन के नीचे पंच बनी हॉलीवुड की पिक्चर है, वो सब बकवास है. लेकिन एनीवेज, या कृष्णा कंटिन्यू. So the strategy might not even work. A 2018 study published in the prestigious journal Nature Astronomy concluded that Mars doesn't have enough CO2 today to achieve significant warming, even if all the stuff were liberated into the atmosphere. And as we saw in the previous slides, that 95% of the atmosphere is made up of carbon dioxide, but still the temperature on Mars is very, very low, and it is minus 200 degrees Celsius, if I am not mistaken. नहीं, वो रात को रहेगा ना कृष्णा. आई थिंक. अच्छा, मेरे को अभी समझ में आया. इवन दो CO2 का परसेंटेज है 95%, लेकिन CO2 की क्वांटिटी जो कृष्णा ने बताया, वहां का एटमॉस्फेयर खाली 1% है. यानी क्वांटिटी बहुत ही कम है वो. ओके, तो उसको गर्म करने के लिए भैया ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए उसके एटमॉस्फेयर में CO2 की. इसलिए इलॉन मस्क बोल रहा है कि भाई बम फोड़ो, CO2 और रिलीज करो उसके आइस कैप में से. ज्यादा CO2 जब होएगा एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा सनलाइट ट्रैप होगा और ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी. एंड आई थिंक कृष्णा, आई एम नॉट मिस्टेक करना, वहां बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशन है दिन और रात में. रात में मेरे ख्याल से -100, 150 या 200, पता नहीं कितना. एनीवे, चेक करके बताना बाद में. ओके. यस. और दिन में कुछ गर्मी रहती है 50-60 डिग्री की. आई डोंट नो कितना. ओके, वाओ, समझ में आया. अब मेरे को समझ में आया क्या स्टोरी है. The conclusion is terraforming Mars is not possible using present-day technology, the researchers wrote, and terraformation of Mars is just making it habitable for humans in the future missions. Terraforming क्या है कृष्णा? Making Mars habitable for life. Okay, ठीक है. It's not possible using present-day technology. Also, make डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि नॉट पॉसिबल. नहीं, ठीक है. वो ये मेरे को सही लगा. इलॉन मस्क ये खतरनाक आदमी है. एक बार कभी शॉर्ट्स बनाता है, कभी फ्लेयर बनाता है, कभी एक टी-शर्ट, या तो कभी डांस करता है. नहीं, वो ठीक है, वो तो कर सकता है. वो तो ये मेरे को मालूम नहीं था टी-शर्ट बनाया करके उसने. He also wore this T-shirt on a conference. वो भी है. पागलपन और जीनियस में बहुत कम फर्क है. ये तो ऐसा लगता है. So it is time for another question. Yes. It's becoming very interesting. सर आप आंसर बोलना, मैं डायरेक्ट लिख देना. ये वहाँ पे बात तो भावेश कहाँ था? कैलिफोर्निया में था. वो अलग का है. अच्छा, which magnetic pole of Earth is nearest to Earth's celestial South Pole. ये तो मैं पढ़ाया मैंने 11th स्टैंडर्ड में. भावेश आंसर दे. साउथ पोल सर.
सेलेस्टियल नॉर्थ पोल दिखा है और मैग्नेटिक पोल। हाँ करेक्ट है। सर पता है ये मैंने आज ही पढ़ा एनटीएससी में, इसलिए मेरे को आता था ये। वेरी गुड अमन, ये 11th में थोड़ा डिटेल में है और मस्त चैप्टर है। So we also had a discussion in offline classes previous year. हाँ सर, कल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करें अरे क्या? हाँ हाँ, मैं अरे क्वेश्चन कल तो लाऊंगा मेरा एकदम एनटीएससी स्टेज 2 का। कल का मेरा मुंबई जाने का प्लान चल रहा है, बट संडे के दिन भी रख सकता हूँ मैं सेल्फ स्टडी, लेकिन आ जाना वैसे Yes, भी the विक्रम सर answer के is साथ। South Pole. एनीवे तो बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी दिस आंसर। वाओ Okay. वेरी नाइस कृष्णा, अच्छा फोटो नाइस। सर साउथ पोल और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल में 15 डिग्री का डिफरेंस है ना? Yeah. कृष्णा बताएगा कितना है। हाँ ओके, अर्थ मैग्नेटिक पोल So जोग्राफिकल what नॉर्थ is पोल the बराबर। this? So you would have observed that when we suspend the bar magnet in the by tying a thread, its north pole points towards the celestial north pole of the Earth. This means, but the north pole of a planet of a magnet points towards the south pole of the another magnet. So if the Earth is a giant magnet, so and the bar magnet is pointing towards the north pole of the bar magnet is pointing towards the celestial north pole, it means that the celestial north pole is actually the magnetic south pole of the Earth. करेक्ट सर समझा मुझे। तो अगर क्या है अमन, अगर तू ये कंपास लेके पहुंच जाएगा ना तो वो नीचे की तरफ डिप दिखाएगा। एनीवेज पॉइंट इज अंडरस्टूड, वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। सर अगर बार मैग्नेट को अर्थ और क्या कहते हैं बार मैग्नेट नल पॉइंट पे लेके गए तो फिर वो रैंडम घूमने लगता है ना? हाँ वो डायरेक्शन में नहीं जा सकता, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई फील्ड नहीं होती, मतलब फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाती है सॉर्ट ऑफ, क्या बोलो, फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे, नल हो जाता है पूरा। हाँ मतलब या नथिंग एग्जिस्ट, सो नल्ला ही बोलेंगे उसको। सर मैं नल्ला नहीं बोला, मैंने नल बोला था, तो चलो वो भी ठीक है। ये भावेश और पार्थ है ना, ये 12th के, इनको पढ़ा रहा था ये लोग ने, उसको नल्ला नल्ला पॉइंट बोल दिया। सर ये पॉइंट पे ना ये पर्सन रहेगा। एनीवेज लेट्स कृष्णा कंटिन्यू। ओके, विदाउट द इनविजिबल शील्ड of the invisible shield. So ये क्या है भाई? the sun as well as other intensively energetic objects also emit high energy protons, atomic nuclei, and other particles that can cause radiation sickness, adversely affect a person's central nervous system, increase one's lifetime risk for cancer, and cause degenerative diseases. So the space is full of high levels of radiation and which are very, very harmful to us. So our sun and the stars are essentially fusion reactors that spew abundant amounts of electromagnetic waves, including X-ray and ultraviolet radiation. And you know that X-ray and ultraviolet rays are very harmful to us. And also other objects like quasars, or which are the centers of the galaxy, or supermassive black holes, and exploding stars, which are supernovae and magnetars and all that. They emit very high energy particles, and some of them travel very close and very, very close to the speed of light. One particle that we discovered was traveling at 99.9999999999% the speed of light. So which is this invisible shield? It is the magnetosphere. So our planet's strong magnetic field forms an invisible barrier, the magnetosphere, against such radiation and diverts most of these electrically charged atomic fragments back into the space. So any strays that are left, any of the strays of these strays that are left that somehow manages to escape the magnetosphere and reach towards the surface of the Earth are absorbed by our thick atmosphere. And this is another important role that the atmosphere plays. So on a mission to Mars, the astronauts could receive radiation doses up to 700 times higher than on Earth.
बाप रे। So in this image you can see this is the this is the sun, and these are the coronal mass ejections. Corona, what is corona? Corona is the name of the outer layer of sun's atmosphere. Uh, and Wow, nice photo. this is the magnetosphere of the Earth, and these are some terminologies. I don't know this about this very much. So this is this center that you can see here is actually a black hole. This black hole, when it eats the most of the mass that it eats, it releases back into the space with very high energy. These are mainly protons, photons, electrons, and neutrons, and some other smaller particles. So these are called the cosmic rays. And the space is full of them. So when astronauts go into space, they also sometimes they experience very small flashes of very bright light into straight their eyes, and these are nothing but the cosmic rays. So then how will we be protected on Mars? The European Space Agency is taking steps on Earth to build technologies that mitigate the exposure to radiation. They are working with particle Okay. accelerator labs to recreate the dangerous amounts of cosmic radiation found in space and build the test shields that will protect against it. They have also planned to send radiation sensors on NASA's upcoming Orion test launch to track exposure during the mission to the moon. And one more interesting topic. Yeah, this is Alexander Grest, astronaut of European Space Agency. So astronauts on board the ISS, International Space Station, recently mixed cement into the space. So when humans go to Mars, Moon or Mars to stay, they will need to construct safe places in which to live and work. The most widely used building material on Earth, concrete, may be the answer. So it is strong, durable, and easy to maintain, and it is enough to provide protection from cosmic radiation and meteorites, and it may be possible to make it using materials available on these celestial bodies too. So that the Okay. idea Very interesting. idea is one day people could use Martian soil to build habitable structures from concrete, which is a sturdy protective material already used on Earth, and it is even used to stop the radiation that is released in the nuclear reactors. करेक्ट। आइडिया वही है कि मार्स का ही मटेरियल लेके मार्स में अगर बनाएंगे तो सस्टेनेबल रहेगा, सो इवेंचुअली वहाँ का ही मटेरियल से ज्यादा चीज अपना बनना चाहिए। वेरी गुड। So this mission is called the MICS, microgravity investigation of cement solidification. And this process is the process of solidification of cement is not only on the macroscopic level, it is much more on the microscopic level too. So it is very essential to see how it happens into the space, because gravity also plays a very important role in mixing and solidification of concrete. So yes, this is another question. Okay. Oh, this is interesting. The most volcanic world of the solar system. अरे यार, I showed the answer. Hello. Yeah. सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
I will go to the next slide. So it is Io. Io Yeah. is one of the 4 Galilean moons of the Jupiter. No. सर आप छत पे घूम रहे हो? अरे कृष्णा का प्रेजेंटेशन देख के मैं जोश में आ गया, मैं बोला टेरेस पे आ गया तो उधर से टेक ऑफ कर लेता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट. I am thinking of taking off from here. Anyways, continue तो Krishna. बारिश बंद है ना? Anyways, let Krishna continue. Like मजा आ रहा है. Phobos, Krishna. like Phobos, Io is also very close to its planet. It is the nearest Galilean moon, innermost Galilean moon,